Hello everyone, good afternoon and welcome to the session. So there is no problem in the voice, right? And I hope that audio, video both are good. Good afternoon, Nisha. So I hope that you all, those who are in the class, I hope you have all have seen the first video of machine learning. Good afternoon, Lubhit Kaushik. Hello, Hemant. Right? I hope you have all seen that video that we have discussed machine learning. Matlab not exactly machine learning, but we discuss, what are the various fields in AI, what is AI, and how are all they related, and how all they are different. Fields like machine learning, data science, deep learning, then we have data analysis, then we have big data, right? I hope you all must have seen that video. So, all those who are new here, my name is Ria, and I have started this new course that is for your machine learning. And in this course, I'll try my best to provide you the entire knowledge that is required at a beginner level for your machine learning. Because as you see these days, as we can see as we're processing forward, AI has become a very important part of our daily lives, and we don't even know it. Right, many of us have iPhone, so we have Siri in that. Many of us have Amazon, so we have Alexa with us. Then we have Google, आपका Google Speaks and all. So all these things are basically related to your AI only, right? And we are dealing with it, but still we are not aware of it, right? So that's why we have come up with this course, and this entire everything will be provided to you on YouTube. So it is everywhere, it is free, right? And when people have this type of thinking that something is for free, then it is not worth it. This is a psychological thing that many of us have noticed also. We feel that until unless it is not costly, it is not good, but this is not the truth. Okay, I am preparing these classes, I am preparing these videos from every source of what do you say, every source that I have with me. Okay, so I'm putting my 100% efforts into these classes. So don't think that it is for free, so it is not good and it is this SE. It's not like that. Okay, I'll try my best to provide you the basic and entire knowledge related to your machine learning. So all those who are present over here, a very 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 warm welcome to the class. ठीक है, and I just want कि आप लोग जब भी class हो related to machine learning, please try to be regular so that we can understand the concept, because these classes will be linked to each other. Obviously, when we're talking about one particular topic, so the classes have to be linked with one another, right? And all those who are new here, please join this Telegram group, that is t.me/netreadigigento. Okay, here I'll be providing you the PDF of this course. Okay, so the first video was the terms related to machine learning and terms related to AI basically. Hello Swaraj. When was it started and when it will be going live? Swaraj, कोर्स जो है आपका स्टार्ट हुआ था 15 को, अभी तक दिस इज द सेकेंड क्लास. ठीक है, टुडे इज द सेकेंड क्लास एंड द फर्स्ट क्लास दैट आई टुक वाज, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा फर्स्ट क्लास. ठीक है, उसमें वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टर्म्स जैसे कि एआई, एंड पीडीएफ जो है, पीडीएफ विल बी प्रोवाइड टू यू ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन ओवर हियर, प्लीज डू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप so that you can be provided with the PDF. Okay. मैम 200 निशा, अभी मैं वो करा दूंगी क्वेश्चंस. ठीक है, जब हम जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपके नेट वाले चैनल पे, यहाँ पे नेट का कोई भी लिंक नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो हम डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगी, वो नेट लिंक में है. बाकी कुछ भी नथिंग इज रिलेटेड टू नेट ओवर है. सो जो भी आपकी क्वेरीज है नेट की, वो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है दैट कि ये जो क्लासेस ये जो होंगी आपके नेट जो भी आपके क्वेश्चंस बचे 2021 के, दैट विल बी कवरिंग इन द क्वेश्चंस व्हेन वी विल डिस्कसिंग. ओके मैम, इज इट लाइव और रिकॉर्डेड? स्वराज, दिस विल बी अ लाइव सेशन. ठीक है, ये लाइव सेशंस होंगे आपके. मे बी फर्स्ट सेशन आपका रिकॉर्डेड रहा होगा. व्हाई आई टेल यू, बिकॉज उसमें जो एक्सेस था दैट वाज प्राइवेट. सो लाइव वो भी हुआ था,
that was also live, but the first class थी that was not visible to everyone, so that is why we have to no we have to play it again by keeping it as a recorded session. But अब से all classes will be live. Okay, so नेक्स्ट दीज आर द कोर्सेज. ठीक है, आप ना अपनी जीजीमेंटो पे ये जाके कोर्सेज विजिट कर सकते हो. नॉट ओनली नेट, गेट के कोर्सेज भी हैं. सो वट एवर इज फीजिबल टू यू. अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन विजिट दीज कोर्सेज. अभी इस वक्त लिए 40% ऑफ चल रहा है, सो यू कैन गो एंड विजिट दोज द वेबसाइट ओवर देयर. प्लस यू हैव दिस ऐप ऑल्सो, सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप. ठीक है, दैट इज फॉर योर प्ले स्टोर. तो गूगल प्ले पे जाके आप इसको अपना जो भी आपकी ऐप है उसको इंस्टॉल करें. नेम इज डिजिमेंटो एजुकेशन. ठीक है, सो दैट्स हाउ ऑल्सो यू कैन एक्सेस योर कोर्सेज. So in the previous class we have discussed this type of things, that these topics we have discussed. So I hope that it is aware to you all. आप लोगों ने क्लासेस देखी है, फर्स्ट क्लास देखी थी आप लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास. I'll make a playlist for machine learning so that you all the classes will be at one go. But still, have you all visit these? ये आपने क्लास देखी थी मैम. विच बुक्स वी प्रेफर फॉर प्रैक्टिस और रिवाइजल लेक्चर्स? स्वराज, सी फॉर रिवाइजिंग माई लेक्चर्स आई विल प्रोवाइड द PDF. ठीक है, PDF आपको मिलेगी इस टेलीग्राम ग्रुप पे, t.me/netRiaDigimento. दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ पे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDFs. ठीक है, ठीक है. सो PDF आपको ये मिल जाएगी. एंड देन रिवीजन के लिए सी बुक्स आप कोई सी भी ले लो फॉर मशीन लर्निंग पर्टिकुलरली फॉर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए आप बात कर रहे हो, सो बुक्स से बेटर मुझे लगता है कि देयर इज सो मच कंटेंट ऑन योर इंटरनेट. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बुक्स यू कैन गो एंड विजिट दीज internet for this particular topic machine learning, because they have updated content as well, right? Okay Swaraj, no problem. If this is your first video, no problem. What you can do is after finishing this class just go to that video and visit that. ठीक है, टेलीग्राम पे उस क्लास का लिंक भी शेयर कर रखा है, so it will be helpful to you as well. Okay, so in the previous session we have discussed what is artificial intelligence, what is machine learning, what is deep learning, then how is big data connected to it, then how is data science connected to all these three fields, and then we have data analysis. Okay, so this was what we have done. Now today we'll be starting with what is machine learning. Okay, so now, okay, let me ask you all, what is machine learning according to you? What do you think is machine learning? What is the basic definition according to you of machine learning? How will you categorize machine learning? How will you define machine learning? Good afternoon, Birpal. If somebody asks you what is, can you please define what is machine learning? या फिर कोई आपका junior है, that person is saying that I don't understand what is machine learning. Training of machine. Can you please elaborate, Nisha? Training of machine like make machine learn something. Training machine with test data. Okay. So this is first thing that we know is that in machine learning we are dealing with data. Good afternoon, Anita. Communication. Hemant, communication as in. So first thing that we know in machine learning is that we are dealing with what? We are dealing with a large amount of data. We have data with us and we have to work on this data. This is something we know. Machine can learn from environment and can predict. Okay. Okay. Chalo. Okay. So let's see what is machine learning first. So machine learning is a subfield of AI. Okay. The goal of machine learning is to understand the structure or pattern of data. So first thing that we have is data. So what we are doing is we are basically using machine learning in order to study the pattern of data and then fit that data into models that can be understood and utilized by people. Okay, this is very basic definition of machine learning that we all should know, that what we are doing is in machine learning we are reading the patterns of data, we are finding the patterns of data, and then with that we are fitting that data into the models so that the machine can predict and predict that data. That's it. What we are doing, we are reading the structure of data and then we are finding the pattern of the data and then the model is predicting. That's it. Okay.
So the term machine learning was coined by Arthur Samuel. That is what I have told in my previous video also. कि Arthur Samuel was the person who have coined the term machine learning. ठीक है? And what he says is it gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. So this means that the computers are learning something, computers are having the ability to learn something, but we are not programming them, we are not giving them instructions to read it. Okay, now let's go in much detail now. So okay, one thing that I want to ask is that we as human beings, if I talk about, okay, we are able to recognize someone, yes or no? How are we able to recognize a person? How are we able to recognize? मतलब we saw someone, ठीक है, now we have kept that thing in our memory, okay, and then when we see again that person, we know that who is that person. मतलब if I am seeing someone, ठीक है, and I have seen that person somewhere, ठीक है, now in my brain there is certain memory of that person. So when my next time I'll be meeting that person, I'll immediately recognize that person, yes or no? Yes. Now, how as humans are we doing this? Can you tell me that how are we as humans being able to recognize someone or able to remember someone? How are we doing this? Because why we are saying this question is that when we see, computer is not an intelligent machine, correct? Computer is not an intelligent machine. So we are treating something into the computer and then only computer is able to do it. For example, if we talk about normal sum, okay, suppose we are talking about, let's talk about addition. Okay, now what happened is that कि first we as humans, ठीक है, human beings ने learn किया कि how to do addition, ठीक है, human beings learn this कि how to do addition. Then after learning this, what we did, then we made a program. We wrote a program that is made up of instructions. That is how you have to add. That is, you will take two numbers a and then you will take another number b and then you will add it. So what we did, first we learned this addition and then we wrote a program to this, correct? Okay, now on the other hand, let's talk about recognizing someone. Okay, let's talk about how we will recognize someone. So now if suppose I'm saying that there is a girl, okay, there is a girl, and now how I have to describe that girl. How will I describe that girl? What I'll say is, I'll simply say that girl is having black hair. Suppose that girl is having black hair and brown eyes. Okay, and fair color. Let's say this is what the description that I have given, and it's tall and is slim. Suppose this is the description that I have of a girl I have met. Okay, now just tell me this. Suppose I have taken very deep details also, that it has nose is of this type, lips of this type, hair is of this type. Okay, now can you tell me of this particular description, इसी description की can I find more than one girl? Can there be 2-3 girls of same description? Yes, there can be so many girls or so many women of same description. Yes or no? Who will be having black hair, brown eyes, fair color, tall and slim. Yes. So how are we able to recognize now? Now there's another girl. ठीक है, let's say that this girl name is A, ठीक है, and let's say this girl name is B. Now both of them are having the same description. Girl A is also having black hair, brown eyes, fair color, tall and slim, and girl B is also the same type. But when we see this girl A again, we will immediately recognize that this is A and the other one is B. Yes or no? Though they have same features, though they have same quality, but how we will differentiate between them? We don't know this. We are doing it in our subconscious mind. In our subconscious mind, we have made an image of that particular person, and that image is stored no matter how, because we cannot describe any person exactly accurately the way they are. Yes or no?
Even if two or three people have same description, then also we as human beings are able to differentiate between the two, though their features are same. Correct? Okay. So how are we as humans doing this? We are doing this in our mind, through our brain. So our brain has certain features. Our brain has certain features that will help us to recognize a person and differentiate with the others. Okay? Correct? Now an interesting concept arises that we are not able to differentiate, मतलब we are not able to write instructions for this, है ना? Because we ourselves don't know how we are doing this, but it is because of our brain. Because of our brain we are able to do this because of a subconscious mind. Now when I myself don't know that how I am doing this, the entire thing, how will I treat my machine, how will I train my machine, how will I write instructions to my machine? Yes, this is a very important point कि जब we don't know how we are recognizing or how we are remembering something, then how will I train my machine or how will I write the instructions? So the question now arises that how do we instruct a computer for doing this? Any idea, anyone? Because we cannot explain or we cannot instruct, we cannot write instructions or we cannot write a program for a computer to know learn कि this is your this image, ये आपकी ये वाली image है. So for this we are using machine learning. So machine learning will help us or to will help the computers to train themselves. So when we're dealing with machine learning, we have very important terms which are learn. So now what will happen is, let's take a very common example. Let's say that we have few images. Okay, what we will do is we will give few images to the machine. Let's say that we want the machine to differentiate between two animals. Let's say that I want my machine to differentiate between cat and dog. Okay, so now what I will do is I'll give few images of cat to the machine and few images of dog to the machine. So now what we'll do, machine will learn the features. Okay, so machine will learn the features. And how it will learn the features? The features will be learned with the help of machine learning algorithms. Okay, and you all should know that machine learning जो है, it takes the help of statistics. ठीक है, so there are statistical algorithms जिनकी help से machine learning is able to perform all these things. So if somebody asks you कि computer कैसे कर रहा है, so computer is doing with the help of machine learning. And machine learning कैसे कर रही है? Machine learning has statistical algorithms, and उन algorithms की help से machine is able to learn itself the features, or you can say the learn something from the images that is useful to it, and then it is applying it to the data. बात समझ में इतनी? ठीक है, so the images that we are providing to the computer, that is known as data. Images that will be provided to the computer or machine for working, that will be termed as data. Correct? इतना क्लियर हुआ एवरीवन? Okay, so machine learning was basically not machine learning. Let's talk about neural networks. ठीक है,
I have told you that your deep neural network is a subfield of machine learning, है ना. This is what we have studied in previous class कि machine learning का एक सब part है, that is your deep neural network. ठीक है. Now neural networks basically were invented way before. ठीक है. In 1940s 1980s में आपके neural networks आ गए थे. But at that time we were not able to generate much accurate results. ठीक है. When machine learning was introduced, right, when machine learning, basically neural networks were introduced somewhere around 1950s अराउंड. ठीक है. 1950s अराउंड आपके न्यूरल नेटवर्क्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, बट we were not able to generate very much accurate results as compared to today's date. ठीक है. So can you tell me why are we able to generate good results now? What are the reasons that we are able to generate good or better results now? Anyone? न्यूरल नेटवर्क्स आपके 1950s में भी यूज हो रहे थे एंड अभी भी हम यूज कर रहे हैं, बट नाउ वी आर एबल टू access it more easily. We are able to generate results more perfectly now as compared to before. Why? क्या आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है फॉर दिस? क्या इसमें मैं कह सकती हूँ दैट नाउ वी हैव एक्सेस टू मोर डेटा, वी हैव मोर अमाउंट ऑफ डेटा. डेटा भी बढ़ गया, राइट. एडवांस टेक्नोलॉजी, करेक्ट. डेटा का अमाउंट, यस, करेक्ट. एडवांस कंप्यूटर सिस्टम से वी कैन से दैट advanced computer system say means that more computer power, right? That is, now the computer is having so much power that it is able to handle a large amount of data, correct. Big data, correct. ठीक है. So now we are able to generate good results because we have much more amount of data. And previous class में मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा you will have data उतना ही बेटर आपकी मशीन लर्न करेगी. बिकॉज अगर आपके पास फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, फ्यू आपने डेटा दिया, सो थोड़ा बहुत लर्न करेगी. एंड जो आपका डेटा है हो सकता है कि आगे जब आप उसको टेस्ट करो, सो इट विल नॉट बी एबल टू जनरेट गुड रिजल्ट्स. But when you will training your data with a large amount of data, now when you will train your machine with a large amount of data, so as a result your machine will work in an efficient way and will give you good results as well, right? So whenever you are also making any project, ठीक है, or you have taken any topic and you are working on something, always try to take a large amount of data. Always try to train your model with a large amount of data so that your data will also, your machine will also work perfectly. Okay, so now as a result, as a crux, we can say that in machine learning, instead of programming, we are trying to teach computer by providing various examples. Can we say this? Can we say this? That instead of programming in machine learning, we are trying to teach the computer to learn something by providing various examples. ठीक है. And we have training data,
ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट अभी के लिए आई टेल यू वी हैव ट्रेनिंग डेटा एंड वी हैव द टेस्टिंग डेटा. Okay, so what is training data? Training data is basically the examples that you are providing. So examples provided are your training data, and testing data is the matlab testing data basically means that after your machine has learned something, then you are testing it कि whether it is giving the correct results or not. क्लियर इतना एवरीवन? यहां तक समझ में आया बेसिक व्हाट इज मशीन लर्निंग? So we are able to use this recognition feature, or we are able to use this differentiating or finding, or just any feature of recognizing someone, remembering someone with the help of machine learning. And computers are not so intelligent, so that is why machine learning makes use of statistics, that is your statistical algorithms to work on. And for that we have to use a large amount of data that can be provided as an input to the machine, and then it will learn from it, and then it will be generating the output. Itna clear hua everyone? Any doubt up till here? नेक्स्ट टॉपिक देखें. Okay, now we have studied ki what is machine learning. No Mohammed, these are free. This course, machine learning course, is free on YouTube. No fees for this course. Okay, it is free over here. Okay, so now we have learned ki what is machine learning. Now next what we'll be learning is how machine learning works. Okay, now another thing that we should know is how machine learning works. So now we'll be seeing that basically how are we training, or how this entire thing works. अभी तक हमने पढ़ा कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग में कैसे होता है, क्या होता है, बट नाउ वी विल बी सीइंग दैट हाउ इट वर्क्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज व्हाट वी हैव. फर्स्ट स्टेप में वी हैव कि जस्ट अ मिनट एवरीवन. Yeah, so the first step is what? In first step what we have is that जो आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, ठीक है, मशीन लर्निंग विल क्रिएट व्हाट? इट विल क्रिएट statistical program, okay, known as models. So इसको हम बोलते हैं models. Okay, so what we have, first thing that we have with us is model. Okay, now how this model is created? So model is created basically, why I am writing is because so that I can explain also, ठीक है, side by side. So model is created with the help of inputs and output. ठीक है, so this means what? कि now we have created a model, ठीक है, and then we have given certain inputs to it, and from those we have generated an output. मतलब what we are saying is that कि input में suppose we have given an image, ठीक है, कोई image है, and suppose that image is suppose something like image of mountains, ठीक है, suppose we have certain image of mountains. So what we'll be telling this model is that this is an input, and whenever you see any type of these inputs, you have to always remember that these are the mountains. So this is what we are telling it.
This example is what we are telling, that whenever you will see these type of images, you have to know that these are the mountains. Another example is you can give images of cat. ठीक है, अगर हम बहुत बेसिक से ही बात करें, so what we'll do is we can give input of images of cat, and we can what we'll train is that this is the input as you are giving the cat, and then the output is image. Basically if we talk about image, so this is an image of cat and the output will be written as cat. ठीक है, so ये हो गया आपका. So now what will happen is so now we have provided examples to it. ठीक है, so examples में we can give images also, we can give speech also, we can give text also, we can give music also. Any type of examples can be given to it. So after giving the examples, we will be having learning algorithms. ठीक है, and then these learning algorithms को we provide these examples, and then it will be given to this model, and then it will be basically helping the model to learn it. So what is happening is that कि machine learning जो algorithms है, ठीक है, these algorithms they will take these examples, ठीक है, and then they will train the model and generate the output. Okay, so now once this training has been done, ठीक है, then model हो गया, वो create हो गया. second step is that model is created with the help of examples. Okay, then in third step what will happen is machine learning algorithms will take examples and it will train the model. ठीक, then in last step what will happen, once the training is done, once we have completed the training, then what we will do is, then we will take an unlabeled image. Okay, what we will do is we will take an unlabeled image and testify it. Okay, so what we will do is, after we have completed the entire training, after we think that we have provided enough examples and we have now provided the examples to it and the machine is trained, then we will take an unlabeled image. So what will happen is, we have created this model, ठीक है, मतलब the machine learning has created its model. See, algorithms are predefined. ठीक है, algorithms are predefined, like we have few algorithms like आपकी that will help in training, जो examples को लेके train करेंगी, and उसके बाद फिर what will happen is, see, I'll tell you, see what is happening is, we have created a statistical program, that is model. Statistical program means कि we have used certain statistics, ठीक है, and that we have created a model. Now in learning algorithms we have few algorithms that are predefined. ठीक है, अभी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, you will come to know about algorithms also. So what will happen is that you will give examples, like you will be giving training data, ठीक है, that will be treated as training data. These examples will be treated as training data. मतलब what you will do is, you will tell these learning algorithms that this is a image of cat, ठीक है, this is image of cat, this is the image of dog, suppose something like this, ठीक है, and with the help of these learning algorithms this model will be trained. So learning algorithms की help से हम model को train करें. This is the difference between model and algorithm. Model को हमने बनाया है in order for a particular problem, to identify for a particular problem, and for training that model we are using these algorithms. Okay, so then what we will do, after completing everything we will be giving an input to it, that will be an unlabeled data. अब labeled unlabeled क्या होता है, I'll clarify to you very quickly. We have two types of data, one is labeled data, ठीक है, and another one is unlabeled data. Okay, now what is labeled data? In labeled data we are
ourselves classifying the data. That what we are saying, ki we are telling you that this image is of a cat, whatever image it is. My drawing is not so good, so I'll not draw anything over here, okay? And this particular image is of dog, this particular image is of, let's say, horse. Okay, so something like over here, something over here, and something over here. So this is what we have given as a label thing, that we are using it for training purpose. In order to train the model, in order to train the our machine, we are using this thing. Now what is unlabeled is, we will give a random picture to this machine now, after thinking that okay, we have enough examples are given to this machine, and we hope that now training has been done. So now we will give this, what we will give any random pic to this one, and we will not label it. We will not tell the machine that what is this. Suppose this is an image of cat, let's say, but we will not tell the machine that is the image of cat. Machine has to classify itself ki what animal it is. So that is your unlabeled data. So when we will be testing it, when we will be testing the machine, in that case we will be giving it an unlabeled data. Okay, so now suppose we have done everything, our training has been done, model has learned something, ठीक है, and learning algorithms आपने use कर ली और model को आपने train कर दिया, everything is done. Now we have to test it, ठीक है. So what we will do, we will give this image to the, what we will say, we will give this image to the model, ठीक है, the model that we have created, and after making it learn it, ठीक है, after learning we have generated this image, and this is what, this is your unlabeled data, ठीक है. We have not mentioned this to the machine that what it is. So now we are expecting that now our machine, though it has learned everything, the model has learned everything, now we are expecting it will generate a good result. So then it will say that this is a cat. So this is how we make our model learn by giving various examples. So your ML relies on having lots of data. So for machine learning, you should have lot amount of data. I purchased course on Udemy or teaching is lucid and awesome. Thank you, Mohammed. Thanks. Can you tell time when class will happen? Mohammed, classes जो है, it every day it will be around 12 p.m. somewhere around 12 p.m. and generally it will be 1.5 hour class or 2 hour class depending on the session कि कितना ज़्यादा लंबा वो चलता है, and उसके according we'll have the classes also. And this course is free on YouTube, so आप आराम से कभी भी बाद में भी, if you're not able to attend it live, you can watch it later also, recorded भी आप देख सकते हो. And you can join this Telegram group, ठीक है, t.me/net Ria Digimento. So जो PDFs हैं, PDFs will be provided to you over here. PDF के लिए you have to join this, ठीक है. Plus if you have any queries, then also you can join this group. यहाँ पे भी आपकी queries solve हो जाएंगी. Any doubt up till now? Any doubt? Any query? मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है? आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू. स्वराज, आई थिंक आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा. थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू आई क्रैक्ड. कॉन्ग्रेचुलेशंस निशा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? Machine learning, what is machine learning and how machine learning works? I hope this is clear to everyone. There is no doubt in these two topics. See, whenever we start with any topic, it's very important कि we start with the basic. कि हमें basic पता हो कि why are we doing it, why are we learning it, why are we studying it, ठीक है. So इसीलिए I am saying again, please do watch the previous session as well, as it is also as it will also help you to clarify some concepts. Because see, I have created this course in such a way I want someone to teach me. I want myself to be taught. ठीक है. So I have kept myself in place of student. ठीक है. And then I am designing these videos and then I am designing these presentations so that
कि अगर मतलब इफ इट इज क्लियर टू मी देन आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू एज वेल. Okay, so that is why every video, every class is important, so please watch it in a manner, ठीक है, जिस तरीके से मारिए, because all these things are linked to one another. Okay, next what we have is, now we have certain methods, machine learning methods. Now what are those machine learning methods? Basically we have few types of learning, ठीक है. We have supervised learning, we have unsupervised learning, and when we have reinforcement learning, ठीक है. What we have? Supervised, unsupervised and reinforcement. I hope you all must have heard these terms. ये terms तो सुने होंगे आपने. Right? So let's see one by one what are these. So we have supervised learning, ठीक है. Supervised learning में we have two types. What are those? Classification and regression. Okay, so classification में we have image classification, diagnostics, identity fraud detection, customer retention. Major cases में classification is used, ठीक है. Major जब हम whenever we as a student also whenever we are working on projects, then also we work on classification algorithms only, ठीक है. Then we have regression, that is advertising popularity prediction, weather forecasting. When we have to forecast something, when we have to predict something, in that case we use regression. Then we have unsupervised learning. In unsupervised learning we have dimensionality reduction and clustering, ठीक है. We have associativity as well, that we'll see to it. Then we have reinforcement learning, and whenever we are having games, ठीक है, whenever we are having games in related to AI, in that case we have reinforcement learning. In robot navigation we have reinforcement learning. Okay, so we'll see one by one, and in detail we'll be as we'll be moving further in this course, then we'll be discussing in detail. So let's talk about the machine learning methods. In machine learning, tasks are generally classified into broad categories, ठीक है. These categories are based on how learning is received, how we are learning or how machines are learning, or how feedback on the learning is given to the system. So basically what we are doing is we are categorizing the methods on the basis of what type of learning we are using. We have supervised. So what is supervised? Supervised algorithms, supervised learning trains algorithm based on example input and output data that is labeled by humans. So abhi we have studied this thing, right? The example that I took, that is we have cat, we have labeled it as cat, we have labeled it as dog. So that example was of your supervised learning, ठीक है. That is we have labeled the data and then we are testing it. Okay. And unsupervised learning is provide the algorithm with no label data in order to allow it to find structure within its input data. So unsupervised learning में क्या हो रहा है? Unsupervised learning में we are not providing the label data, but we are allowing the machine to find the pattern itself. मतलब कि we are providing the data to the machine and we are asking the machine कि now I have provided the data to you, now you find the pattern and tell me what it is. Clear है इतना? सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज का बेसिक डिफरेंस समझ में आया. सुपरवाइज में वी हैव लेबल डेटा, वी गिव इट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, एंड देन वी गिव द लेबल टू मशीन कि दिस इज द लेबल डेटा एंड दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क. But in case of unsupervised learning, what we are doing, we are giving an unlabeled data, and what we are doing, we are asking the machine that now I have given this data to you, it's your duty to find the pattern of it and then tell me what is the data. इतना clear हुआ everyone? Okay, just give me a minute. अच्छा, before moving forward, how many of you have the knowledge of Python? Python कितनों को पढ़ी है? Python कितनों को आती है?
Basic. Okay. So, matlab all the students that are over here, have you ever made any project related to machine learning? कभी बनाया आप लोगों ने कोई project या आप लोगों को आगे बनाना हो, ऐसा कुछ है? Anyone? Rocks versus mine वाला बनाया है. Rocks versus mine मतलब कि you gave input to the machine, right? And then input में you give images of rocks and mine, ऐसा करके. And then output में मतलब basically ऐसे ही कुछ जैसे हमने cats and dogs वाला किया वैसा वाला. Okay, चलो. Let's see supervised learning. Okay, so in supervised learning, an AI system is presented with data which is labeled, which means each tagged data with the correct label. So we have tagged data with the label. The goal is to approximate the mapping functions. Okay, data. Okay. हाँ, ये आपकी वेबसाइट इज वेरी नोन वेबसाइट फॉर फाइंडिंग डेटा. यहाँ पे आपके मतलब ये मैंने सुना है दैट डेटा जो है इस वेबसाइट से बहुत इजीली बहुत बहुत सारे अमाउंट्स में डेटा मिलता है, राइट? ठीक है. सो गोल इज टू अप्रोक्सीमेट द मैपिंग फंक्शन सो वेल दैट व्हेन यू हैव न्यू इनपुट डेटा यू कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट वेरिएबल्स. ठीक है. सो अब यहाँ पे if you see this image over here, we have given the label data. Label क्या दिया है हमने? That if we have this type of image, it will be a hexagon. If we have this type of image, it will be a triangle. And if we have this type of image, it will be a square. So we have already labeled the data from our end. And then we have provided this data to the model. Then what we are doing? Then this model has to predict. What it has to predict, what we did is we gave these two data to it. This is your testing data. ठीक है. ये आपका ट्रेनिंग का हो गया एंड दिस इज योर टेस्टिंग. टेस्टिंग मीन्स नाउ आई हैव गिवन दिस डेटा एंड आई एम आस्किंग whether my machine is able to tell me what type of models, what type of data it is. So when it predicted as a square and it predicted as a triangle. So this is your supervised learning, that you have given a label data to your machine, then your machine is trained with the help of algorithms and then it is generating an output. Okay, so what they're saying, the purpose of this method is for the algorithm to be able to learn by comparing its actual output with the taught outputs. Matlab, you have basically your machine has to learn. What it has to learn? By comparing the outputs with one another to find errors and modify the model accordingly. Supervised learning therefore uses patterns to predict label values on additional unlabeled data. Then a common use case of supervised learning is to use historical data to predict statistically likely future events. It may use historical stock market information or upcoming fluctuations or employed to filter out spam emails. Okay, so whenever we have to filter out spam emails or whenever we have to anticipate something, in that case we can use this supervised learning. Okay, then we have two types of supervised learning, classification and regression. So classification क्या हो गया? Classification में we are basically classifying our output as a category. ठीक है, category या फिर classes. So we are doing what? We are basically classifying our problem in terms of category, that is red or blue, disease and no disease, या फिर cats and dogs जिस हमने example बताया. ठीक है. So we are trying to find the label. We have labeled the input and then we are trying to find that what is the output. The test जो हम दे रहे हैं उसमें क्या output आ रहा है. Then we have regression. Now regression में क्या है कि it is basically talking about the real value. जैसे suppose example में, regression के example में suppose I have given music as an input. ठीक है, music input दिया and now I am asking that on listening to this music how much percent
is it emotional? Suppose if this is my concept, if this is I have to find कि कौन सा म्यूजिक कितना इमोशनल है. So now this is your regression, that you are not asking, you are not labeling it, you are simply saying, you are talking in terms of real values, in terms of numbers. ठीक है, या फिर डॉलर्स की टर्म्स बात करो, वेट की टर्म्स में बात करो. सो दैट इज योर रिग्रेशन. ठीक है, देन वी हैव अदर फ्यू कैटेगरीज. इसमें जो एल्गोरिथम्स आपके आएंगे ऐसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग की. सो विल कम टू सी की वेदर इट इज क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, वो हम लेटर ऑन कोर्स में बढ़ेगा तो हम देखेंगे. ठीक है, देन वी हैव अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. So in unsupervised learning, AI is presented with unlabeled, uncategorized data, and systems algorithm act on data without prior training. Output is dependent upon the coded algorithms. The goal of unsupervised learning may be as straightforward as discovering hidden patterns within a data. So very clear, we have to discover, matlab the machine has to discover the pattern of the data set itself. ठीक है, इसमें आपका फीचर लर्निंग भी हो सकता है एंड यू हैव टू क्लासीफाई द रॉ डेटा. सो बेसिकली डिफरेंस क्या है सुपरवाइज अनसुपरवाइज में? सुपरवाइज लर्निंग में यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द लेबल डेटा एंड देन यू हैव टू यू आर गिविंग अ टेस्ट डेटा एंड देन यू हैव टू, मतलब आपने खुद ही मेंशन कर रखा है सब कुछ, सिंपल सा आपको बस फाइंड करना है आपकी मशीन को, उसको लर्न करके ट्रेन करना अपने आप को. बट अनसुपरवाइज में क्या हो रहा है? अनसुपरवाइज में यू आर गिविंग द डेटा टू योर मशीन एंड यू आर लीविंग एवरीथिंग ऑन मशीन कि अब you have to find everything about this data. I don't know anything about the data set. You find the patterns, you give me the results about this data. Okay, so if you see this thing, so in this image we have 1 2 3 4 5 cartoon characters or 5 animals आप बोलो. ठीक है, so what we have to do now, what machine has done, we have not given any information about it कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. We have not given any information. What machine did itself, it has classified the animals into ducks and not ducks. खुद ही उसने पैटर्न फाइंड किया. ओके, खुद ही उसने क्लासिफाई कर दिया कि जिनके भी ऐसे अपनी बीक्स हैं, इनकी येलो बीक्स हैं, दे आर क्लासिफाइड एज डक्स. सो दिस इज योर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कि डेटा में से द मशीन हैज फाउंड द पैटर्न इटसेल्फ एंड इट हैज क्लासिफाइड द, इट हैज कैटेगराइज्ड द डेटा इनटू टू व्हाट यू कैन से कैटेगरीज आप बोल सकते हो. बट यहाँ पे वी हैव नॉट मेंशन दी, वी हैव नॉट लेबल्ड द डेटा, इट इज अ डक, इट इज अ डक, इट इज अ माउस, इट इज अ रैबिट, इट्स अ डक. वी हैव नॉट मेंशन इट. ये काम अपना खुद किया है आपकी मशीन ने. क्लियर है चीज? एनी डाउट इन दिस अप टू हियर? एनी डाउट अप टू हियर? Okay. Then in types of unsupervised we have clustering and association. अभी dimensionality reduction भी है, वो हम आगे चल के देखेंगे क्या है. ठीक है, so clustering is, अब clustering problem is where you want to discover the inherent groupings. So what you are doing, you have to basically, your machine has to find the groupings that are undoubtedly there but you are not aware of it. ठीक है, that is such as grouping customers by purchasing the behavior, by purchasing behavior कि how they are purchasing some things, on that basis you are grouping it. And association is, association में हम association rules use करते हैं, that if x then y ऐसे करके rules होते हैं हमारे, association rules हम उन्हें बोलते हैं. So that is used in association where you want to discover rules that describe large portions of your data, such as people that buy x also tend to buy y. मतलब people that buy let's say bread, अगर हम x को bread बोल रहे हैं तो y हो गया हमारा butter. So people that tend to buy bread will also buy butter. So if x then y, मतलब अगर they are buying bread they'll buy butter as well. So these are your association rules. ठीक है, so unsupervised learning में we can say that output is not known to us. Output is not known. ठीक है, and in supervised we are training the models on basis of examples, that is your input and output. Then we have reinforcement learning. So reinforcement learning algorithm में we have what? We have agents. ठीक है, that learns by interacting with its environment. So यहाँ पे we have this concept of environment, learns by interacting with its environment. Agent receive rewards by performing correctly.
ठीक है, रिसीव्स रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मिंग करेक्टली एंड पेनल्टीज फॉर परफॉर्मिंग इनकरेक्टली। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो इसका एक, you can think of an example like training a dog. It is similar to reinforcement learning. How it is similar to reinforcement learning is, what we are doing is we are training a dog, and whenever a dog does a good action or is performing good, what we do, we give it a reward in sense, मतलब कोई भी बिस्किट हो गया, कुछ भी हो गया, we give it to reward. And when a dog is performing a wrong action, we generally give it a penalty. ठीक है, पेनल्टी पनिशमेंट कुछ भी आप बोल सकते हो. Alexa में भी we have basically yes supervised में आप क्या supervised नहीं, Alexa जो है आपका एक अलग टाइप की उसमें मतलब उसमें आपकी एक अलग टाइप ऑफ कंसेप्ट है. जैसे कि सुपरवाइज तो ये हो गया कि आपने कोई कुछ आपने डेटा दिया एंड देन यू आर गिविंग ए टेस्टिंग अ डेटा. ठीक है, उसमें क्या है कि आपके कुछ डेटा जो है ऑलरेडी स्टोर्ड है, आपका डेटा ऑलरेडी स्टोर है एंड यू आर बेसिकली उसको आपने ट्रेन किया है दैट वेन एवर वील, मतलब बेसिकली एक रोबोट है आपका वो. सो आई थिंक कि वो आपका जो है रोबोट जब आता है तो इट विल कम अंडर योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्योंकि ये आपका अगर हम और डिटेल में देखें सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपका क्या आता है, अगर आप इमेज देखो यहाँ पे, सो रोबोट एप्लीकेशंस जो है दैट कम्स अंडर योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग ओनली. इफ यू सी दिस इमेज यहाँ पे, सो रोबोट नेविगेशन टाइप की जो थिंग्स हैं, लर्निंग टास्क, स्किल एक्विजिशन, रियल टाइम डिसीजंस, सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो आई फील दैट सीरी हो गया, ये सब जो हो गए, दीज ऑल विल कम अंडर योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग ओनली. हाई प्रिडिक्शन एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करता है आपके डेटा पे. ठीक है, आजकल इन टूडेज वर्ल्ड वी आर मोर यूजिंग योर डीप न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, in today's world we have highly started the using of neural networks. So अब क्या है कि अब हम न्यूरल नेटवर्क्स के एल्गोरिथम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, एक्यूरेसी जितनी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करते हैं, कुछ पर्टिकुलर लर्निंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क देती हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा कि आपका डेटा किस टाइप का है. द वे योर डेटा इज, उसके हिसाब से यू हैव टू अप्लाई लर्निंग. हाँ, अगर आपका डेटा क्लासिफाइड है, ठीक है, योर डेटा इज ऑलरेडी लेबल्ड, अगर उस पर आप अनसुपरवाइज लर्निंग लगा दोगे सो ऑब्वियसली योर डेटा विल, योर मशीन विल नॉट वर्क प्रॉपरली. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि हाउ वेल यू know your data and how well you are applying your learning on that data. So जो accuracy है वो basically उसी चीज़ पे आती है. ये मैं आपको अपने जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उसकी जब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी तो उसमें आपको बताऊंगी, बिकॉज उसमें वी हैव फाउंड द एक्यूरेसी एज वेल. ठीक है, सो जितना ज़्यादा आपका डेटा होगा ना, जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, उतनी ही ज़्यादा प्रेडिक्शंस आपकी एक्यूरेट होंगी. मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था मास्टर्स में, दैट वाज बेसिकली ऑन योर सुपरवाइज लर्निंग. उसमें सुपरवाइज लर्निंग थी, क्लासिफिकेशन था ऑलरेडी. सो दैट इज कि वो आपका डेटा कितने अच्छे से आपने लिया है, कितने अच्छे से आप अपने डेटा को समझ पा रहे हो. बिकॉज कई बार क्या होता है कि डेटा हमारे पास बहुत सारा होता है बट वी डोंट नो हाउ टू वर्क विद दैट डेटा, सो दैट ऑल्सो कॉजेज अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो एजेंट लर्न्स विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम ह्यूमन. अब ह्यूमन इसमें कोई इंटरवीन नहीं करता, ये पर्टिकुलर एजेंट का काम है टू लर्न फ्रॉम इट बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स रिवॉर्ड एंड मिनिमाइजिंग इट्स पेनल्टी. इट इज अ टाइप ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग दैट ट्रेन्स एल्गोरिथम यूजिंग अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. सो आई थिंक आपके जितने भी ये रोबोट्स हैं, जितने भी आपके ये हैं, इन सब में आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही लगी हुई है. बाकी और डिटेल में हम देखेंगे कि क्या कैसे, क्योंकि अभी हमने बस बेसिक सा पढ़ा है, राइट. बट आपकी जितनी भी ये रोबोट्स जो बने हुए ऑलरेडी, इनमें कुछ हाई लेवल की एप्लीकेशंस लगी हुई हैं. सो व्हेन एज फर्दर जब हम जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे वील सी टू इट कि इसमें क्या क्या कितने कितने उससे लगा है. ठीक है, वील स्टडी दिस ऑल्सो बिकॉज एक आध तो इसका इंटरेस्ट भी है और पढ़ना भी चाहिए कि क्या है, कैसे इनका वर्किंग है, क्या इनमें हो रखा है. सो वील स्टडी ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम एंड देन वील कम टू इट. सो ये आपका एग्जाम्पल है.
तो ये आपका एजेंट है, मतलब आपका रोबोट हो गया. दिस इज द एनवायरमेंट. ठीक है. सो नाउ व्हाट इट इज, फर्स्ट इट विल ऑब्जर्व. what it does is it will observe the environment. Then what will happen is after observing the environment it will use a policy. इसमें आपकी एक एक्शन पॉलिसी होती है. ठीक है, एक्शन होते हैं इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, जो हम अभी हम जैसे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो विल कम टू नो टू इट. सो व्हाट विल हैपन इज नाउ एनवायरमेंट में एजेंट ने रिएक्ट किया. ठीक है, एजेंट रिएक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट एंड व्हाट हैपेंड इज इट विल ईदर गेट द रिवॉर्ड और इट विल गेट अ पेनल्टी. अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे मिला उसे पेनल्टी, दैट इज -50 पॉइंट्स, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नाउ व्हाट इट हैज डन, इट विल ट्रेन इटसेल्फ दैट whenever my environment is of this type it means it is a bad environment and I should stay away from it or I should avoid it. So it will update its learning step. ठीक है, एंड जब तक कि ये इसको लर्न नहीं कर लेता it will keep on performing it, it will keep on learning from it. So iterate until an optimal policy is found. So basic reinforcement में क्या है कि agent जो है it will learn by itself. Okay, learn by itself. No human intervention in your reinforcement learning. Clear है इतना everyone? So whenever we are talking about games के केस में हम reinforcement learning को बहुत प्रेफरेंस देते हैं. अब एक काम है आपके लिए, वो क्या काम है अभी मैं आपको बताती हूँ, बट एक बार जस्ट क्लियरली ये देख लो बहुत क्विकली. मशीन लर्निंग में वी हैव सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में वी हैव क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम्स क्या क्या है, नाइफ बेस्ड लर्निंग, डिसीजन ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट नेबर्स, KNN. रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, लैसो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन. फिर क्लस्टरिंग है, के मीन्स, मीन शिफ्ट, डीबी स्कैन, एग्लोमेरेटिव एंड देन गॉसियन मिक्सचर. एंड देन डिसीजन मेकिंग में आपका रीइंफोर्समेंट होता है क्यू लर्निंग, आर लर्निंग, टीडी लर्निंग. सो ये बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जो सो कैटेगराइज कर दिया है. ठीक है, सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी विल बी स्टडिंग दीज टाइप ऑफ लर्निंग्स. अब व्हाट वर्क आई हैव फ्रॉम यू इज, क्या करना है आपको बेसिकली, देयर आर 2 गेम्स. One is Deep Blue and one is AlphaGo. नाम सुना आप लोगों ने, Deep Blue and AlphaGo. Anybody else? किसने सुना है नाम? ठीक है, तो अब एक तो आपको जो काम है, होमवर्क है, यू हैव टू फर्स्ट स्टडी अबाउट दीज 2 थिंग्स. ये आपका AI से रिलेटेड ही है. ठीक है, आपका मशीन लर्निंग यूज करके गेम्स बने थे. ठीक है, डीप ब्लू बनाया है आपका IBM ने. थोड़ा सा डिटेल देती हूँ कि ये आपका चेस का गेम है. ठीक है, सो यू हैव टू स्टडी दिस डीप ब्लू, देन यू हैव टू स्टडी AlphaGo. ठीक है, एंड देन यू हैव टू स्टडी लिटिल बिट अबाउट कि जो एलेक्सा है ये, ठीक है, हाउ इज इट वर्किंग, बिकॉज सी सुपरवाइज में क्या पढ़ा है हमने, सुपरवाइज लर्निंग में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. मतलब ट्रेनिंग लेबलिंग हमने की है एंड देन वी आर आस्किंग फॉर द टेस्टिंग रिजल्ट्स. ठीक है, सो
उस कंसेप्ट से आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी सीरी है, एलेक्सा जो भी है, इट इज यूजिंग सुपरवाइज लर्निंग. बट आई थिंक these robots are comprised of supervised plus reinforcement. दोनों ही लर्निंग इस पे अप्लाई हो रही है. अब कैसे अप्लाई हो रही है, क्या अप्लाई हो रही है, कैसे हो रही है, वील सी इट इन द अपकमिंग क्लासेस. ठीक है. अब ये हमें चेक करना है कि क्या ऐसा ही है या इनकी वर्किंग जो है व्हाट इज इट. ठीक है. सो जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसके में पढ़ेंगे कि हमें जो ये हमारे रोबोट्स जो हम डे टू डे लाइफ में जिनको हम यूज कर रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली वी यूजिंग इट इन आवर डे टू डे लाइफ, हाउ आर दे वर्किंग. कहीं कहीं पे दे आर डेफिनेटली बीइंग ट्रेन्ड बाय यूज ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, नो डाउट. वाई? बिकॉज यहाँ पे हम इन्हें ट्रेन करते हैं. बिकॉज अगर हम इसे कुछ भी पूछे, देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन देम, right? So whenever we have to use that, we can access these informations, we can chat with them. ठीक है. So what you have to do is, now first you have to study about these games. कल की क्लास में फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज टू गेम्स बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन गेम्स इन टर्म्स ऑफ योर मशीन लर्निंग, अल्फा गो एंड डीप ब्लू. ठीक है. बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, बस थोड़ा सा कि क्या है ये गेम्स. आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दीज गेम्स एंड व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ दीज गेम्स. Just a second. ओके. सो ये करना है एक तो. और कल फिर वील बी डिस्कसिंग फर्स्ट दीज गेम्स एंड देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट दिस ऑल्सो कि क्या है. ठीक है. अभी आई कैन नॉट अश्योर यू कि एंटायर वर्किंग वील बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी हैव नॉट कंप्लीटेड एनीथिंग अबाउट मशीन लर्निंग. अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. दिस इज वेरी 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 बेसिक. ओके. देन just give me a minute. Let me see one thing. Okay. So previous class mein I have mentioned this also that whenever we are doing machine learning, so what are the prerequisites for machine learning, है ना. prerequisites मतलब कि what we should know already when we are talking about machine learning. So what all things we should know is basically, first thing that we should know is statistics. Now you have to tell me कि आपको ये पता है सबके बारे में. statistics आना चाहिए. ठीक है. मैथ्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए मशीन लर्निंग की. ऐसे दे से दैट इफ यू आर वर्किंग ऑन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग यू शुड नो स्टैटिस्टिक्स, यू शुड नो मशीन लर्निंग, यू शुड नो मैथ्स. ठीक है. देन प्रोग्रामिंग में जैसे वी आर राइट नाउ लेट्स टॉक, वी विल बी टॉकिंग अबाउट पाइथन. ठीक है. वी विल बी डीलिंग विद पाइथन इन मशीन लर्निंग की जो हम बात करें. ठीक है. देन मैथ्स में आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, हो गया लीनियर अलजेब्रा, हो गया. सो आर यू ऑल अवेयर ऑफ दिस? बिकॉज अभी what we will do is कि when we will be reading the algorithms, okay, I'll try to add these concepts also into that जितना हमें required है, so that we don't have to run here and there for anything. We'll get everything over here only. So statistics also जितना भी है अगर लगेगा, so we'll try to cover this as well. Right? Any doubt? So ये PDF it will be provided to you on Telegram group. I hope you all know the Telegram link now, right? t.me/net Ria Digimento. Okay, join this for the PDF.
बेसिक, वेरी बेसिक, नॉट इन डेप्थ। सी, बेसिकली जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग में होगी, तो उसमें जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी विल डील विद इट। ओके, सो आज बेसिकली आई फील दैट अगर हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, इफ़ वी हैव टू रीड इन वेरी मच डेप्थ, सो आई कैन से अराउंड 1.5 months तो आप मान के चलो, राइट, 1.5 months तो अप्रोक्सीमेट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एंड येस, फर्स्ट क्लास आपकी 15th को हुई थी, उसके बाद बिकॉज ऑफ होली एंड ऑल थोड़ा डिले हो गया था, बट अब से वी विल बी हैविंग द क्लासेस रेगुलरली, ठीक है, डेली होंगी, एंड द टाइम विल बी 12 PM, ठीक है। सो 1 hour की क्लास या 1.5 hour की क्लास या 2 hour की क्लास, इट विल डिपेंड ऑन कि व्हाट टॉपिक वी आर टेकिंग। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि हम हर टॉपिक को उसी दिन कंप्लीट कर लें, लिंगर ऑन ना करें आगे के लिए। ओके बिकॉज अगर आप देखो तो वैसे तो जो कोर्स, क्रैश कोर्स जो होता है, अगर हम मशीन लर्निंग का क्रैश कोर्स बात करें तो क्रैश कोर्स चलता है अराउंड 1 month से चलता ही है, क्रैश कोर्स 1 month का होता ही है, राइट। सो यहाँ पे आई एम ट्राइंग कि बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में भी ना हो, बट इतना हो कि हाँ, इफ़ वी हैव टू मेक एनी प्रोजेक्ट इन फ्यूचर, इफ इन आर नो इफ इन एनी somehow anywhere if we have to work on ML, we should know at least इतना तो आता ही हो कि हम स्टार्टिंग तो कर ही लें, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें होंगी, सो इट विल हेल्प यू ऑल कि आगे आगे आप लोग अपने आप इतना पढ़ के अपना अप्लाई कर सको, ठीक है। सो मशीन लर्निंग हम करेंगे इसमें, और आपका जो डीप लर्निंग है, दैट इज जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स, वो हम करेंगे। सो ML प्लस डीप लर्निंग दोनों होगी। बाकी आपकी पाइथन इसमें नहीं होगी, पाइथन की मैं इसमें नहीं कराऊंगी कुछ भी, पाइथन के लिए अलग से कोर्स चलेगा, उसमें हम पाइथन का देखेंगे, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का है। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। इवनिंग में वील बी हैविंग अनदर क्लास, ठीक है। इवनिंग में अराउंड 4:30 PM पे वी विल बी हैविंग अ सेशन, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट वी विल बी डूइंग दी क्वेश्चंस ऑन डिजिटल लॉजिक and computer architecture. So all those who want to attend that class, please feel free to join. इस कोर्स में प्रोजेक्ट करेंगे क्या? I'll see to it and I'll try कि हम करें, ठीक है। I'll try, बट अगर मान लो अभी आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, ठीक है। I'll see to it, क्योंकि उसके लिए फिर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कोर्स करना है, अगर प्रोजेक्ट करना है तो इसमें हमें प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो लेट मी सी टू इट, ठीक है। अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ समझ में आता है, सो वील डेफिनेटली ट्राई फॉर इट, क्योंकि उसमें कुछ इट्स वेरी गुड कि हम उसे अप्लाई करें, जो हमने पढ़ा है उसे हम अप्लाई करें, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस, ठीक है। सो आई थिंक अबाउट इट, एंड अभी 50-50 मान के चलो, अगर अगर इफ वील हैव टाइम एंड वील हैव रिसोर्सेज, देन डेफिनेटली वी विल। ओके, यस, 4:30 PM पे क्वेश्चंस होंगे आपके डिजिटल लॉजिक पे और कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। सो प्लीज लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सो उसको ज्वाइन कर लो एंड ज्वाइन द क्लास एज वेल। ओके, ओके निशा, ठीक है, आई सी टू इट, ठीक है। आपके वो इंटरप्ट वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना आप, इंटरप्ट वाला, उसकी मुझे थ्योरी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो आपका क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली और थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, वो इसमें आपका इंटरप्ट और ये सब क्वेश्चन है, राइट। तो उसकी जब थ्योरी हम करेंगे तब आई ऐड दैट क्वेश्चन। अगर आज मैं ऐड करूंगी, सो आई ट्राई टू ऐड थ्योरी एज वेल, ठीक है। आई सी टू इट, उसके बाद फिर आई इन्फॉर्म यू। ओके, so that's it for today, that's it for this session. See you all in the evening. Please join on time, okay everyone. Chalo, thank you, take care, bye bye, see you all in the evening पे प्लीज टाइमली ज्वाइन करें ना क्लास को, ओके। एंड PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएगी, ओके। थैंक यू एवरीवन।